Jai Hind, guys. So again, we're presented with a question in linear algebra, and here the question is given in matrices. Okay, so there are two matrices A and B, and they belong to the vector space M3R. So ये जो vector space है M3R, इसका मतलब क्या है? This means all 3 cross 3 matrices with real entries. Okay, 3 cross 3 matrices with real entries. This is the meaning. Now इधर में क्या पूछ रहा है? इधर में एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो फर्स्ट पार्ट, if A and B belongs to in 3 real entries, all 3 cross 2 matrix with real entries, then always remember दोनों का ये trace of AB is equals to trace of BA. So this is number 1 point you should know. This is an important concept and number 1 point they should know. The trace of AB is equals to trace of BA. अच्छा, दोनों अगर equal हुआ, so can we write trace of AB minus BA, that is trace of AB minus BA is equals to 0, क्योंकि इधर में तो ट्रेस ए बी और बी ए का इक्वल्स है. सो इन दोनों का जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, वी कैन राइट दिस एज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, एंड हेंस इससे तो हम लोग को पता है कि ये दो वैल्यूज इक्वल है और हेंस फोर्थ ये जीरो होगा. सो वी ये हो गया सेकंड पॉइंट. नाउ अब आज आते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट क्या होगा? इधर में देखिए, ए बी एंड बी ए दोनों का ट्रेस इक्वल है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं बोल सकता हूं ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रेस अगर जीरो होगा, सो sum of eigenvalues of this matrix is also zero. Of AB minus BA is equals to 0. This can be derived. Okay, ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट इस क्वेश्चन से. अच्छा, लेट मी राइट दिस ए बी माइनस बी ए का जो आइगन वैल्यूज है, लेट इट बी, लेट आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई माइनस. अच्छा, मैंने आइगन वैल्यू ऐसे क्यों चूज किया? क्योंकि एक्स प्लस वाई और इधर भी नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दोनों को ऐड करने से सम जीरो होगा, और हम लोग को पता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इन दिस केस जीरो होना चाहिए, इसलिए मैंने आइगन वैल्यूज ऐसे चूज किया. ओके, नाउ वी गॉट दिस आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी माइनस बी ए. अच्छा, if eigenvalues of ab minus ba is equals to this, then determinant of ab minus ba क्या होगा? We already know that determinant is equals to product of eigenvalues, and hence determinant will become minus x into y into x plus y. Beautiful. We're done up till this now. Okay, अब जो मैट्रिक्स हमें और एक दिया हुआ है, that is the matrix AB minus BA का होल क्यूब. इसका जो आइगन वैल्यूज होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? उधर में ऑलरेडी एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई है, सो इसका आइगन वैल्यूज होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. ओके, एंड सो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए का होल क्यूब, इसका जो ट्रेस होगा दैट विल बी नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई
इसका whole cube. Okay, which will turn out to be, let me scroll down a bit, this will turn out to be x cube plus y cube minus x cube minus y cube minus 3ab a plus b. ओके, सो इधर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस पोर्शन. ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस 3ab a प्लस, सॉरी, इधर में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया. लेट मी, मैं इधर में जस्ट ए एंड बी इंट्रोड्यूस कर दिया था. सो कट आउट एंड इधर में होना चाहिए माइनस 3xy x plus y. Okay, so we're left with minus 3xy x plus y. This is the trace of this eigen of this matrix. Okay, so we are getting the trace of this matrix. अब ऑलरेडी हम लोगों को क्या पता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए क्या हो रहा था, माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई ऐसा बन रहा था. सो दिस इज, we got this one, trace of ab minus ba ka cube, we got determinant of ab minus ba, and now if we relate both of this we can already find out the det of ab minus ba, which was minus xy x plus y, and trace of this one is equals to, इधर में 1/3 इधर में दिया हुआ है, so 1/3 multiplied by 3 minus 3xy x plus y. So if we cancel both of this out, we are getting same from each of those sides. So LHS equals to RHS. Hence, the given statement is true. Okay. Hence, the given statement is true. Also, from this question, हम लोग ने 4 important concepts सीखे. First of all, trace of AB is equals to trace of BA. Second of all, trace is equals to the sum of eigenvalues, and hence हम लोग कैसे eigenvalue choose कर रहे हैं इधर में, उसका एक फॉर्म सीखे. थर्ड, हम लोग डिटर्मिनेंट पता है, मल्टीप्लीकेशन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ eigenvalues, वो भी हम लोग इधर से यूज किए, एंड देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, so that's it for today guys. Let's meet in another question solving session.